In the third over, England put into bat are 20 without loss. Their score is on 14 of 10 deliveries. Alex Hales is on 6. The running in so far that we've seen. 13 runs have now been conceded by Junaid in this over. Like I said, a very poor over. This is just the beginning of the England innings. You've got to put them under pressure. As the next delivery, this is where he should bowl on the off stump, away from the off stump, in the corridors of uncertainty. Defensively pushed back. The end of over number 3. England put into bat are 20 without loss. ایسی کا مسئلہ ہے اس مسئلے کا حل صرف مساقہ صرف چوتھا اوور شروع ہوا. پہلی گیند اس کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کی آف سائڈ پر. گیند گئی مٹون پر. اپنے فالو تھرو میں گیند کو فیلڈ کیا ریسٹ نے. دوبارہ چل پڑے ہیں اپنے بالنگ کے نشان پر. 3 اوور اور 1 گیندیں کی جا چکی ہیں. بیسٹو بیٹنگ کر رہے ہیں 14 پر. ہیلس نے 6 رنز بنائے ہیں. مشتمل ہے بیسٹو، ہیلس، روٹس، مورگن، بٹلر، سٹوکس، علی، راشد، پلنکٹ، ووڈ اور بال. ایک مطلب رومان رئیس گیند کریں گے اور ان کا سامنا کریں گے بیٹسمین ہیلس. اوور پچ گیند اس کو آف سائڈ پر اچھے طریقے سے اسٹیل کر دیا ہے. تھرڈ آسانی سے ایک رن حاصل کیا بیٹسمین نے. 1 رن کے اضافے سے اسکور ہو گیا ہے انگلینڈ کا 21 بغیر کسی نقصان کے. پاکستان کی ٹیم میں یہ کھلاڑی شامل ہیں: اظہر، فخر، بابر، حفیظ، شعیب، سرفراز، عماد، رومان، شاداب، حسن علی اور جنید. تو اس طرح دونوں ٹیموں نے بہترین حکمت عملی اپناتے ہوئے تبدیلیاں کی ہیں اور توقع یہی ہے کہ آج اچھا مقابلہ ہوگا. 3 اوور 2 گیندیں 21 رنز. انگلینڈ بغیر کسی نقصان کی یہ گیند بیٹ پر لگی اور شاکٹ پر گئی. اچھی گیند تھی. رومان پر کچھ پریشر ہوگا اور یہ پہلا میچ بڑا اہم ہے. ایک کرنچ میچ ہے، ایک اہم میچ ہے اور کافی دیکھا جا رہا ہے، کافی سنا جا رہا ہے. اور آج کی جو پرفارمنس ہے وہ ان کے مستقبل کے حوالے سے کچھ اندازے لگانے میں مدد دے گی سلیکٹرز کو، شائقین کرکٹ کو، ایکسپرٹس کو. رومان کے لیے ایک آج بڑا دن ہے، ڈیبیو ہے اور یہ پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھیل رہے ہیں. گیند کریں گے اور ان کا سامنا کریں گے. بیسٹو 14 رنز اچھے اسٹروک میں کریں اور وکٹوں کے درمیان بہت اچھا دوڑ ہے. یہ گیند مڈل اور لیگ سٹمپ پر جس کو آسانی سے حاصل کیا. اب 22 بغیر کسی نقصان کے. بیسٹو 6 رن کے اضافے سے اب پہنچ گئے ہیں 15 پر، جبکہ ہیلز 7 رنز پر ناٹ آؤٹ جائے گی. گیند کا سامنا کریں گے. اس اوور میں ابھی تک 4 گیندیں پھینکی گئی ہیں اور صرف 2 رنز بنے ہیں. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان یہ پہلا سیمی فائنل ہے ICC چیمپئنز ٹرافی کا اور ٹاس پاکستان نے جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا. شاداب اور رومان رئیس ٹیم کا حصہ ہے. عبدالقریب عامر اور فہیم اشرف کی جگہ ایک مرتبہ پھر رومان رئیس گیند کریں گے. اسلپ پوائنٹ کور، شارٹ کور ابھی آف سائڈ پر ہے. یہ گیند شاٹ اس کو آن سائڈ پر پیش کیا. اچھے طریقے سے مکمل کیا ہے. بیٹسمین نے دوسرا بنانے کی کوشش کریں گے. پہلے گیند کے پیچھے گیند کو یقین کیا. دوستوں بہت اچھا دوڑتے ہیں اور 1 رن کو 2 اور 2 کو 3 میں بدل سکتے ہیں. تو اس طرح یہ دونوں بیٹسمین اچھے طریقے سے بیٹنگ کرتے ہوئے اب ہیلز پہنچ گئے ہیں. بیسٹو پہنچ گئے ہیں 15 پر. ہیلز 9 پر. ہیلز پہنچ گئے ہیں 9 پر. بیسٹو بدستور 15 پر. انگلینڈ 24 بغیر کسی نقصان کے. چوتھا اوور جاری ہے. اس کی آخری گیند کریں گے رومان رئیس. آن سائڈ پہ لانگ لیگ باؤنڈری لائن کے اوپر ہے. مڈ وکٹ اور مڈ آن سرکل کے اندر ہے. رومان رئیس 6 رن دے چکے ہیں اور دوسرا اوور کر رہے ہیں. کا سامنا کریں گے ہیلز. دوڑنا شروع کیا رومان رئیس نے. اوور کی ٹائی اوور پچ گئی. زبردست اپیل. اس طرح پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی اور رومان رئیس نے بریک تھرو دلوایا ہے پاکستان کو. اہم کامیابی اور کہنا ہوگا کہ اس کامیابی پر جہاں رومان رئیس بہت خوش ہیں، پاکستان کے تمام سپورٹرز بھی. اور ریویو کے لیے اب مجھے لگتا ہے ریویو کریں گے کیونکہ دونوں بیٹسمین آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ہوگا لیکن بہرحال یہ ہے کے لیے اس صورتحال میں
रोमान रईस का दुरुस्त था और बैलेट का फ्रंट फुट पे लगा, हाफ कॉक थे और जो फिल वक्त देखकर अगर हम गैस लगा सकते हैं तो ये बता सकते हैं कि बैट्समैन मुश्किल में है। अगला कदम थोड़ा आगे था, पूरा आगे नहीं गए, और अगर वो जो स्पीकोमीटर है उसको देखा जाए तो उसको देखना होगा कि आया गेंद बैट पर लगी है या नहीं, इसको बहुत देखा जाएगा और जो टेलीविजन अंपायर है वो पूरे तरीके से इसको देखेंगे कि आया ये मुकम्मल तौर पर सही डिसीजन है, इसमें कोई शक या चुभे वाली बात है या नहीं। और पाकिस्तान की जो फील्डर्स है वो हाथों में हाथ डाले देख रहे हैं कि अब ये फैसला किस तरह का, बड़े कीन है और परेशान है थोड़े से हेल्स, क्योंकि अगर लाइन देखें तो लाइन जो है जाहिर है कि वो द लाइन ये कुछ हुआ है और ये बैट्समैन के हक में जाएगा, तो इस तरह ये फैसला बदलना पड़ा अंपायर को, इस तरह नॉट आउट करा दिया गया है। 4 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ, इंग्लैंड 24 बगैर किसी नुकसान के। अब चुकाए नहीं और क्या चलेगी, क्योंकि बोलता लाया पाकिस्तान में पहली बार एडवांस टेक्नोलॉजी टोटल बैटरी घंटे रोशन रखे और चले साला साल बोलता जुगाड़ का तोड़। This ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by Cement Bank, Roshan, Well, plenty happening out there at Cardiff. Pakistan's moment of ecstasy turned into agony as batsman Hayes was given ILBW to race, but then on the review that they took, the ball had pitched outside the line of the leg stump, and obviously any line of the leg stump was definitely when it hit all the 3 stumps. And as we watched on the monitors, just outside the leg stump, and the umpire had to change his decision. So Pakistan lost their review in the first. England maintains their review as Junaid bowling his third over the wickets. So Johnny Bairstow goes forward, just pushes it down the track. The bowler just follows through, picks it up. Bairstow 15, Hayes 9. England in the 5th over, 24 without loss. A quick discussion took place between Hayes and Johnny Bairstow because Hayes was convinced that the ball pitched outside the line of the leg stump. Through that discussion, he decided to review that decision. And like I said, there was this moment of joy for Pakistan which was very short-lived. And Junaid, away, passes the umpire, goes to Johnny Bairstow, comes forward, strokes it to mid-on straight to the fielder. Pakistan desperately looking for that breakthrough. England put into bat, very comfortably placed at the moment. A very fast outfield, therefore any ball beating the infield normally travels to the boundary pretty quickly. Bowling his third over. None for 18. England 24 without loss. Into the ball in the air, single to throw bowlers and missing the stumps. But that, of course, we've seen that they're not afraid to pick up singles and even take some very quick runs. This was a good delivery. It was a little bit more than Bairstow anticipated. It was in the air for a little while. And then Alex Hales trying for that run, immediately sent back by Bairstow. 24 without loss in the 5th over. Johnny Bairstow included the side in place of Jason Roy as away goes Junaid. This time comes forward, strokes it in that position of a mid-off, and it's towards the left of the fielder. By the time he moves across, the batsman very quickly pick up a single. That takes England on to 25 now, 25 without loss in the 5th over. In his third, Roman Reis has bowled the other 2.
winning a toss earlier on, Sarfraz decided to field first, put England in the first semi-final of the Champions Trophy 2017. Pakistan number 2 in their group, England number 1 in there. The last delivery of the over, Junaid passes the umpire. The off-stump and stroke beautifully in towards the extra cover region. Over-pitch delivery, and Alex Hale had absolutely no problem in dispatching that to the boundary. The end of over number 5, England 29 without loss. This ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by Sunehri Bank Limited, मेहनत वसूल। जानते हो बेटा, तुम्हारे अब्बा अक्सर सवारी ना होने की वजह से परेशान रहते थे। फैक्ट्री जाने के लिए रोज 3-3 बसें बदलनी पड़ती थी, पर तुमसे कभी कुछ कहा नहीं उन्होंने। अब तो मुझे बताया कि नहीं, मैं कुछ कोशिश तो करता। अरे तुम्हारे अब्बा बता देते तो बताओ ना, कहते हैं मेरे बच्चा ला करो, पर टेस्ट करता है। आज बहुत खुश है वैसे, तुम्हारी साथ कुरानगाजी में मोटर हम करते हैं आपके अपनों की मेहनत की कदर, इसीलिए आपको मिलेगी रकम की वसूली के साथ और भी ज्यादा खुशियाँ। दुनिया भर से मनीग्राम के जरिए भेजी गई रकम सुनहरी बैंक की 285 से ज्यादा ब्रांचेस से वसूल करें और बजरिया कुरानगाजी जीते मोटर बाइक, स्मार्टफोन, कैश प्राइजेस और कई शानदार इनामात। मजीद मालूमात के लिए 021-111-766-374। सुनहरी बैंक, रोशन हर कदम। शरात ज़ाबित लागू है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2017 पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। मकाम है कार्डिफ और छठे ओवर का यहाँ खेल शुरू हो चुका है। स्कोर है इंग्लैंड का पहले बैटिंग करते हुए 29 टॉस पाकिस्तान ने जीता था और खुद पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था। आज रुमान रईस को कैद दी गई है और अब तक उन्होंने 2 ओवर्स करवाए हैं। ये उनका तीसरा ओवर है, 6 रन दिए हैं। एक डिसीजन उनके हाथ में जरूर आया था एलबीडब्ल्यू का, लेकिन उसके बाद में देखा गया तो गेंद लेग स्टंप से बाहर क्योंकि पिच हुआ था, डिसीजन जो है वो वापस होना पड़ा। 29 एक बार फिर रुमान रईस आए गेंद की, इस मरतबा अच्छा शॉट खेला है, कोई मौका नहीं। गेंद को रोकने के लिए दाएं जरूर लगाई थी मिडा के फील्डर ने अपने दाएं जाने पर, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर फेंका और चौका रेस्टो का तीसरा चौका है और स्कोर इंग्लैंड का 33 हो गया है। छठे ओवर का ये खेल है। टॉस आज जीता था सरफराज ने और एक बार फिर उन्होंने ये हिकमत अमली अपनाई कि वो पहले उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि इंग्लैंड कितना स्कोर करेगा। जब वो बैटिंग करेंगे तो उन्हें कितना स्कोर करना पड़ेगा, किस अंदाज में इनिंग्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आज अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अब तक इस गेंद को ऑफ साइड पे खेलना चाहते थे, गेंद चूंकि अंदर की तरफ थोड़ा सा आ रही ऊपर गई और 34 इंग्लैंड का स्कोर है। छठे ओवर का ये खेल है। आज जेसन ड्राई को इंग्लिश टीम में शामिल नहीं किया गया, उनकी जगह जॉन ब्रेस्टो को शामिल किया गया है। पहले ओवर में उनके खिलाफ एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की थी जुनैद ने और मामला जो है वो थर्ड अंपायर तक भी पहुंचा था, लेकिन क्योंकि फील्ड अंपायर ने आउट करार दिए जा चुके थे तो फिर विकेट से गेंद विकेट को लग भी रहा था। फैसला जो है फिर वही हुआ जो थर्ड अंपायर के इस मरतबा रुमान रईस आए गेंद की, ऊंचा शॉट खेला, आउट होने का खतरा और आउट। हेल्स आउट हुए हैं और पहली कामयाबी हासिल करने में कामयाब रुमान रईस अपनी इंटरनेशनल कैरियर की पहली विकेट ली है और इंग्लैंड को पहला नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। एलेक्स हेल्स जो अच्छे फॉर्म में है, वे ऊंचा खेल गए थे और कोई गलती नहीं की कवर के फील्डर ने और यूं आउट करने में कामयाब हुए रुमान रईस। तो पहला विकेट गिरा इंग्लैंड का 34 पर 1 और ये छठे ओवर का खेल है। ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by Ru Afzal Ramadan Mubarak. इस रमजान हमदर्द बन जाए, एक एक मुस्कुराहट बांटते हुए जिंदगी के रंगों में घुल जाए। रूह अफ़ज़ा रमजान कहते हैं आपके अपनों की मेहनत पर अब आपको मिलेगी रकम की वसूलात और भी ज्यादा खुशियाँ। दुनिया
منی گرام کے ذریعے بھیجی گئی سمہری بینک کی 285 سے زائد برانچز سے وصول کریں. ماضی جیتے موٹر بائک، اسمارٹ فون، شاندار انعامات. مزید معلوم 111766674. روشن شرائط و ضوابط لاگو ہے. This ICC Trophy 2017 is brought to you by سنہری بینک، روشن ہر قدم. تو پہلا وکٹ لینے میں پاکستان کامیاب، پہلا نقصان رومان رئیس پہنچانے میں کامیاب. انٹرنیشنل میچ کھیل رہے ہیں اوڈیائی اور اس میں پہلی وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں رومان رئیس. تو پاکستان نے جو ایک فورسفل تبدیلی کی ہے اپنے اس اسکواڈ میں، وہ اب تک انہیں فائدہ پہنچاتے بھی. اور اب آئے ہیں نئے بیٹسمین جو روٹ اور آؤٹ ہونے والے کھلاڑی تھے ایلیکس ہیلز، جو کہ آگے بڑھ کر یہ گیند کو جو آگے بڑھا ہوا گیند تھا ڈرائیو کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن گیند چونکہ ہوا میں اٹھ گیا تو پھر کور کے فیلڈر نے کوئی غلطی نہیں کی اور یہ آؤٹ ہو کر واپس گئے ایلیکس ہیلز. تو ایک اور خوبی جو رومان رئیس نے اپنا رکھی ہے کہ جب بھی یہ وکٹ لیتے ہیں خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور صرف مسکرا کے دیکھتے ہیں بیٹسمین کو. آج انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی انہوں نے وہ جو اپنی ایک روزہ میچوں جو کہ لوکل میچز کھیلے گئے تھے یا جو فرسٹ کلاس میں انہوں نے ایک طریقہ اپنا رکھا ہے کہ بالکل ہاں ہو نہیں کرتے، اچھل کود نہیں کرتے اور آرام سے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج بھی انہوں نے پہلی وکٹ کو اسی طرح سیلیبریٹ کیا. رومان رئیس آئے گیند کی اس مرتبہ اس گیند کو کھیلنے کی کوشش نہیں کی اور جانے دیا وکٹ کیپر کے پاس. تو 6 اوور کا کھیل مکمل ہوا ہے. 34 منٹ پہلے بیٹنگ کرتے تھے. اچھا نا ایک منٹ England batsman. The last delivery of Iman's over. Outside the off-stump, goes on the back foot, cuts well, beats the fielder in the point region. The fielder from deep point runs across, picks it up, throws it back to Sarfraz. In the meantime, the batsman have picked up 2. And with those 2 runs, England end over number 7 with 37 for 1.
गुड्डू कोई दूसरी जुगाड़ लगा। अब जुगाड़ नहीं, वोल्टा चलेगी, क्योंकि वोल्टा लाया पाकिस्तान में पहली बार एडवांस टेक्नोलॉजी, ट्यूबुलर बैटरी, घर को रोशन रखे और चले साला साल। वोल्टा जुगाड़ का दौर। इंग्लैंड पाकिस्तान सेमीफाइनल, कार्डिफ के ये मकाम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। रोमान रईस अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। आए गेंद की इस मरतबा इस गेंद को बनाते हुए दर्शकों ने दिफाई अंदाज में खेला। फुल साइड पे गेंद गई, रन बनाने का मौका नहीं। ये 8वें ओवर का आगाज हुआ है। 37 है इंग्लैंड का स्कोर, एक खिलाड़ी आउट है। To meet 27 for one, Pakistan in fact should have got 2 wickets, but luck was not on their side. Couple of decisions. Once the wicket was kissed by the ball, and second time it just went higher, and England batsmen were lucky. Next delivery, this one driven towards short cover position. Pakistan has got a setback. Muhammad Ahmed is not there. Very big setback. Yeah, बिल्कुल। And when I saw that Ahmed is not playing, I was just struck with this news. What a big loss for Pakistan cricket team. Crucial match for Pakistan. And Ramzan 1992, and Pakistan playing in the semis, and West Indies playing against Australia. Off he goes, and bowls this time he cuts it well down to deep backward point. Fielder from third man comes, picks up the ball, 2 more runs. So do you remember that famous Australia-West Indies match? Yeah, Well, if West Indies beats Australia, Pakistan is in. And if it is other way around, then the packages are going to be fast. Yeah, बहुत बहुत सी चीजें थी। बहरहाल पाकिस्तान वहाँ फतेह हुआ था। देखें कि यहाँ क्या सूरत हाल होती है। पाकिस्तान बहरहाल बड़ा अहम मैच अपने राउंड का जीतने के बाद सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गया है। इनकी इस मरतबा इस गेंद को के साथ 40 ओवर था ये इंग्लैंड की इनिंग का। 8वां ओवर है। 25 रन पर दर्शकों खेल रहे हैं, जबकि रूट उनके साथ मौजूद है। Similarities. Pakistan has got a very strong chance of going into the finals, and people are already dreaming about India-Pakistan final, which can be, can be there, and all of England would be travelling towards London. Off he goes. Roman Reis, left arm, and balls on the middle stump. This time goes on the back foot and plays it back to the bowler. Well, it would be a dream final if India-Pakistan meet in England. Well, people from Manchester, Edgbaston, London, and from everywhere, from Scotland, they'll be going to the cricket ground to watch the game, and Indians and Pakistanis and Bangladeshis and Sri Lankans. So much the tickets will not be available, if it can be possible. रोमान रईस आए गेंद की इस मरतबा इस गेंद को निकालने में कामयाब हुए। मिड विकेट बाउंड्री की जा रही तेजी के साथ गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाता हुआ और अब बाउंड्री लाइन से दूर हो गया है। यो 8वें ओवर का इख्तिताम चौके पर 44 हो गया है स्कोर। इंग्लैंड का एक खिलाड़ी आउट है। ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by Sunehri Bank Limited, मेहनत वसूल। डियर अली, कैसे हैं आप? हम सब यहाँ ठीक हैं। मैं जानती हूँ आप परदेश में रहकर इतनी मेहनत सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे। प्लीज इतना ओवर टाइम मत किया करें। पता है गुड़िया अब अटक अटक कर बाबा बोलने लगी है। इस बार आपके भेजे हुए पैसों के साथ लकी ड्रॉ में स्मार्टफोन भी मिला है। आपको ये मैसेज इसी से व्हाट्सएप किया है। हम करते हैं आपके अपनों की मेहनत की कदर, इसीलिए अब आपको मिलेगी रकम की वसूली के साथ और भी ज्यादा खुशियाँ। दुनिया भर से मनीग्राम के जरिए भेजी गई रकूम सुनहरी बैंक की 285 से ज्यादा ब्रांचेस से वसूल करें और बजरिया कुरानदाजी जीते मोटर बाइक, स्मार्टफोन्स, कैश प्राइजेस और कई शानदार इनामात। मजीद मालूमात के लिए 021-111-766-374। सुनहरी बैंक, रोशन हर कदम। शरारत तो आप लागू है।
Well, the spinner is there. Imad Wasim has got the ball in his hands and bowled first delivery and played on the offside, and second one played towards the mid-wicket fielder is chasing the ball and it is running towards the boundary and 4 runs. ओवर में अच्छा चौका लगाया था और 4 रन हासिल किए थे आखिरी गेंद के ऊपर. But there is no spin in the wicket, and batsman playing very easily this time. Wanted to use the field and drive it on bowler's back drive, but straight to Imad Wasim who picks up the ball. There is no run. 5.2 की औसत से रन बन रहे हैं. 90 ओवर का खेल है. 44 मार आए. गेंद थी इस पर गेंद को पुश किया. गेंद आया लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर. एक बनाने का मौका था बैट्समैन के लिए. 25 हो गया उनका स्कोर. 29 गेंदें खेली हैं अब तक जॉन बेरिस्टो ने. Tamir, I've got one personal view on the game. When Samir won the toss, I was of the view that Pakistan should have batted first. This is my personal point. गेंद इस मतलब आप बॉलर की जानिब खेला जो बनने का इसमें कोई मौका नहीं. अच्छी गेंदें अब तक करवाई हैं वसीम ने. इस ओवर में एक गेंद बना है. 4 गेंदें हो चुकी हैं और 45 है इंग्लैंड का स्कोर. पहले बैटिंग करते हुए पहले सेमीफाइनल कार्ड का एक राउंड है. आए गेंद की इस मतलब बैकफुट पर आकर गेंद को जोरदार शॉट खेलना चाहते हैं. ऑन साइड पर एक बार फिर जानी बाता हुआ गेंद एक बार फिर मिस किया, लेकिन खुशकिस्मती के इस मतलब गेंद स्टंप्स को भी मिस कर रहा था. दूसरा तीसरा मौका है जब इस तरह की शॉट अटेम्प्ट की है जो रूट ने, और हर मतलब गेंद जो है उनकी दानिश के मुताबिक ये गेंद लेग ब्रेक होगी, लेकिन गेंद अंदर की जानी पाता है. एक बार फिर इस गेंद को खेलने की कोशिश की. एक बार फिर बीट हुए. अच्छा ओवर करवाने में कामयाब हुए हैं. 45 पर 1 और 9 ओवर अपने अख्ताम को पहुंचे. ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by Afza Ramadan Mubarak. आओ इस रमजान हमदर्द बन जाए, एक एक मुस्कुराहट बांटते जिंदगी के रंगों में खुल जाए. रूह अफ़ज़ा रमजान मुबारक. अच्छी किस्मत जो रूट की. 2-3 मरतबा उन्होंने इमाद वसीम को लेग ब्रेक समझकर खेला, लेकिन गेंद जो है आम के साथ उन्होंने अंदर की जानिब लाई गेंद को. हर बार बीच में खुशकिस्मत ये रही कि आउट होने से बाल बाल बचे हैं 2-4 मरतबा. Tamir Bairstow is batting very well after that incidental escape. Well, he is in fact using his feet too, but with him is Root, who is the best England batsman, and England will be depending on this partnership. While Pakistan would of course be looking for a quick breakthrough so that either Root or Bairstow should be back in the pavilion, or if he goes and bowls, then cut it towards deep backward point. Couple, yes. Just a couple of runs short of 50, 48 for 1, and they are in number 10. रोमान रईस का अब तक 21 रन दिए हैं. एक खिलाड़ी आउट किया है. आउट होने वाले खिलाड़ी हैं एलेक्स हेल्स, जो 13 रन बनाने के बाद आउट हुए थे. बाबर आजम ने कैच पकड़ा था और उस वक्त स्कोर 34, स्कोर बढ़ता हुआ 48 हो चुका है. रोमान रईस गेंद की इस मतलब इस गेंद को बहुत एतमाद के साथ नहीं खेला. दोनों किनारा लेता हुआ गेंद आया था स्क्वायर लेग की जानिब. बहरहाल जो रूट जो उनका कैलिबर है उसके मुताबिक बैटिंग करने में ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे, लेकिन विकेट में मौजूद हैं, क्रीज पर ठहरे हुए हैं और इंग्लैंड के स्कोर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं. 4 रन अब तक 23 ओवर में बने हैं. 10वां ओवर है इंग्लैंड की इनिंग का. 49 स्कोर है. एक खिलाड़ी आउट है. 5.1 की औसत से रन बन रहे हैं. And Pakistan's dream and ambition would be to get rid of one of two at this time. On the next under pulls it towards mid-wicket. Well fielded by Azhar. बड़ा जोर से शॉट खेला था. ऊंचा था. उछले जरूर थे
this delivery on the leg stump. He tried to hoist it over mid wicket and ball popped out of Azharuddin's hand. So possible chance of once again unlucky Pakistan not to get this wicket, and Roman Reis was dejected, gloomy on this dropping of catch. Azharuddin is one of the better ones, better fielders, but he dropped this catch. मुश्किल कैच था, जोरदार शॉट था, उसने जरूर गेंद को थोड़ा सा काबू करने में नाकाम रहे। गेंद उनके हाथ में आया और निकल गया और रन इंग्लैंड का 51 हो गया है स्कोर। एक खिलाड़ी आउट है और रोमान रईस का ये 5वें ओवर की आखिरी गेंद करवाएंगे और 10वें ओवर की आखिरी गेंद खेलेगा इंग्लैंड। मिड विकेट की जानिब शॉर्ट मिड विकेट की पोजीशन पर फील्ड कर रहे थे अजहर अली। उछले कोशिश की कि किसी तरीके के साथ गेंद को काबू कर लें, लेकिन गेंद उनके हाथ में आया और निकल गया। बहरहाल मौका एक बार फिर दर्शकों के लिए मिल गया। इस पर बहुत स्लो डिलीवरी थी, लेकिन लेग स्टंप पर थी। इसको आहिस्ते के साथ कैच करने की जानिब और एक रन बनाने का मौका। तो 10 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। 52 है इंग्लैंड का स्कोर। एक खिलाड़ी आउट है। फिर स्टोक 29 और रूट 10 ओवर पर बैटिंग कर रहे हैं। ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by सुनहरी बैंक लिमिटेड मेहनत वसूल। जानते हो बेटा, तुम्हारे अब्बा अक्सर सवारी ना होने की वजह से परेशान रहते थे। फैक्ट्री जाने के लिए रोज 3-3 बसें बदलनी पड़ती थी, पर तुमसे कभी कुछ कहा नहीं उन्होंने। आपने मुझे बताया क्यों नहीं अम्मी? मैं कुछ कोशिश तो करता। अरे तुम्हारे अब्बा बता देते तो बताओ ना। कहते हैं मेरे बच्चे पे इतना बोझ ना डाला करो, पर देश में दिन रात मेहनत करता है। आज बहुत खुश है वैसे। तुम्हारी भेजी हुई रकम के साथ कुरानदाजी में मोटरसाइकिल जो निकल आई है। हम करते हैं आपके अपनों की मेहनत की कदर, इसीलिए अब आपको मिलेगी रकम की वसूली के साथ और भी ज्यादा खुशियाँ। दुनिया भर से मनीग्राम के जरिए भेजी गई रकम सुनहरी बैंक की 285 से ज्यादा ब्रांचेस से वसूल करें और बजरिया कुरानदाजी जीते मोटर बाइक, स्मार्टफोन्स, कैश प्राइजेस और कई शानदार इनामात। मजीद मालूमात के लिए 021-111-766-374। सुनहरी बैंक, रोशन हर कदम। शरारत तो लागू है। इंग्लैंड तरफ पहले 1 विकेट के नुकसान पर और पिछले ओवर में रोमान रईस के ये था बेस्ट जब वो 28 पर थे और लिया नहीं गया, वो गिरना चाहिए था। थोड़ी सी कसर बाकी रह गई थी। इंग्लैंड 56 विकेट के नुकसान पर अमाद वसीम बॉल कर रहे हैं। ये भी बॉलिंग करते हैं। बहुत ज्यादा कामयाबी उन्होंने इस टूर्नामेंट में नहीं हासिल की, लेकिन दरमियानी ओवर के लिए एक अच्छी बॉलिंग आती है। हाथ से ये गेंद जो कि शॉर्ट टाइप का गेंद टॉप पर गई, गेंद गई लॉन्ग ऑफ पर पीक पोजीशन में को हासिल किया। 13 स्कोर विकेट के नुकसान पर 31 पर रूट्स 11 के लिए अहम पार्ट गेंद करने के लिए आए। इस गेंद को ठीक कर बैटिंग के लिए काफी साजगार नजर आ रहा है। अब तक कहना होगा तो रोमान अच्छी बॉलिंग की इस फील्ड के साजगार है। 4 गेंदें कर चुके हैं, चारों पे एक रन बना है। एक मतलब फिर आया, ये गेंद बहुत शॉर्ट थी, इसको दफाई अंदाज से ऑफ साइड पर ड्राइव किया। और ये जो अब तक बॉलिंग की है इस ओवर में, ये फ्रेंडली बॉलिंग की है। अहमद वसीम ने रन रोकने की कोशिश नहीं की, आउट करना तो दूर की बात है। इंग्लैंड 57 1 विकेट के नुकसान पर। जो इंग्लैंड के बैट्समैन है, खासतौर पर जो प्रेस्टो है, इनको लकी कहना होगा। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, इसको ऑन साइड पर प्लेस किया और एक रन हासिल किया। इस बार गेंद को घुमाया था, काफी किया था, एक अटैकिंग बॉल थी। एक रन के इजाफे से इंग्लैंड 58 1 विकेट के नुकसान पर 11 ओवरों का खेल मुकम्मल हो चुका है। हम करते हैं आपके अपनों की मेहनत की कदर, इसीलिए अब आपको मिलेगी रकम की वसूली के साथ और भी ज्यादा खुशियाँ। दुनिया भर से मनीग्राम के जरिए भेजी गई रकम सुनहरी बैंक की 285 से ज्यादा ब्रांचेस से वसूल करें और बजरिया कुरानदाजी जीते मोटर बाइक, स्मार्टफोन्स, कैश प्राइजेस और कई शानदार इनामात। मजीद मालूमात के लिए 021-111-766-374। सुनहरी बैंक, रोशन हर कदम। शरारत लागू है। ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by
England 4-1 after. Remember, they lost. The score was 30 saves. Got Barber off the bowling of race in 13 off the with 2-4. Meanwhile, another change in the bowling attack. Shadab Khan has been brought on to bowl in place of Race and has been included in the side in place of Aim Ashraf. Lot depends on Shadab Khan. Very new in the Pakistan side. England at the moment, Bairstow is on 32, Root is on 13. Bairstow getting another life when England were 50. As Shadab moves away, tosses it up, it's in the air and drops a little short of the fielder at mid-off. That was a good delivery, not really controlling that push towards the offside, just dropping short of the fielder. So Shadab, the leg spinner included in this semi-final. England 59 for 1 in the 12th over. The first being bowled by Shadab in this semi-final. Bairstow on strike, he's on 32. Root is on 14. Root really not comfortable out there so far. Shadab from over the wickets pitches that shot. That's a terrible delivery. Punch in towards the extra cover region. There is protection there, but that was a very poor delivery by Shadab. A long hop and no problem for the batsman to pick up that single. 33 now to Bairstow. 60 to in the 12th over. The run rate pretty good as far as English is concerned. There's the next delivery once again. That's been pulled towards the deep wicket region in the Congress corner. Root picks up a boundary by Shadab. Very effective. The batsman spun a long hop. The Root making absolutely no mistake towards the Cows corner and picking up another 4. Outside the off stump, when cut that, misses straight into hands of the keeper. That's the line and length he should be bowling in. Not those long hops, they're going to be very expensive. England put into bat. At the moment, 64 for 1. This time makes it into a full toss drive, but straight to the fielder in the extra. Root on 18 of 21 deliveries. He's been having a fine Champions Trophy. He's already got 100. Close the field. Shadab takes off. Then Root moves away, asks the bowler to just hold on. Over the wickets. The Roots come forward, pushes it towards the right of the field in the covers and very quickly go for that single. They're not missing out on singles. So end up over number 12. England put into bat are 65. Patient. UPS symptoms बेजान हो गया बैटरी का मसला है इस मसले का हल सिर्फ उठाता बैटरी कर रहा था सिर्फ उठाता चले लंबे अरसे तक पेशेंट डिस्चार्ज हर फुल चार्ज इंग्लैंड 65 एक विकेट के नुकसान पर ब्रेस्टो और रूस बड़े अच्छे तरीके से बैटिंग करते हुए 5.42 किया। तो बरकरार रखी हुई है 12 ओवर और एक गेंद हो चुकी है। अम्माद वसीम में बॉलर
हासिल किया। इस एक रन का स्कोर हो गया है 75, एक विकेट के नुकसान पर। 15 ओवर जारी है, हमाद वसीम बॉलिंग कर रहे हैं और अच्छी बॉलिंग इन्होंने अब तक की है, 14 रन दिए हैं और ये 5वां ओवर है। नती बॉलिंग की है हमाद ने, फिर गेंद करेंगे। वापस बॉल की जाने पर किसी रन का जारी रूट्स एंड बैट्समैन पाइल्स दूसरी तरफ प्रेस्टो की तरीके से बैटिंग करते हुए 40 रन बनाओ जब 49 रनों का सामना किया है। गेंद करेंगे राउंड का विकेट बाहर के पास से गुजरी, अच्छी गेंद थी, ऑफ साइड पर प्लेस किया, गेंद 84 की जानिब
और एक रन का ओवर स्पिन। के से अब इंग्लैंड 76 एक विकेट के नुकसान पर याद रहे कि टॉस पाकिस्तान ने जीता था और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। इंग्लैंड के कप्तान ने कहा था कि अगर वो टॉस जीते तो पहले बैटिंग को तरजीह देते, तो इनके लिए जो इनकी हिम्मत है उसके मुताबिक हालात साजगार हैं। पाकिस्तान के लिए फील्ड करने के हवाले से हालात साजगार हैं। अहमद वसीम आई गेंद शॉर्ट डिफरेंस उठा के गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ की जानिब और अच्छे अंदाज से मुकम्मल किया। इस गेंद को देखकर ये अंदाजा होता है कि विकेट बैटिंग के लिए भी साजगार है। इस तरह रन में इजाफा होता हुआ 15 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ। This ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by Rue Afza Ramadan Mubarak. इस रमजान हमदर्द बन जाए, एक एक मुस्कुराहट बांटते, जिंदगी के रंगों खुल जाए। रूह अफ़ज़ा रमजान मुबारक। Champions Trophy 2017 is brought to you by सुनहरी बैंक, रोशन हर कदम। Well, England slowly building on that partnership. Remember, the first wicket fell when the score was 34, and Alex Hale departed. Meanwhile, they've moved on to 78 now for one. Bestro on 42. Root is on 20. Shadab bowling his third for 14 hits. This one pitched on the off, and the batsman goes on to the back foot. Towards the point. Pakistan partnership from 12. Plenty of depth in the England. Shadab runs away. Tosser up. Gets it into a full toss. Sweeps it towards the deep mid wicket. Reaching the fielder moves across, picks it up. Throws it to the keeper. The batsman in the meantime had picked up another single. That single now takes England on to 79 for one in the 16th over. Shadab turns around over the wickets, pushes it once again straight to the fielder at the backward of point, and the batsman not in a position to pick up a run there. Third over being bowled by Shadab, the leg spinner, included in the side today at the cost of Fahim Ashraf. 16th over in progress. Cuts, but once again straight to the fielder in the point region. Line and length he should be bowling, but unfortunately he's given a number of long hops as well as full tosses. Perhaps he'll get his line and length perfect after this over. This one's not, and is it not? We'll have to wait and see, because we're restricted, remember, to the screen, as we say, the off and airborne line number 16 in England 80 for 1. ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by Sunehri Bank Limited. जानते हो बेटा, तुम्हारे अब्बा की वजह से परेशान जाने के लिए रोज नहीं पड़ती थी, पर तुमसे कभी कुछ कहा नहीं। अरे तुम्हारे तो बताओ ना, कहते हैं मेरे बच्चे पे इतना बोझ ना डाला करो, पर देश में दिन रात मेहनत करता है। आज बहुत खुश है वैसे, तुम्हारी भेजी हुई रकम के साथ कुरानदाजी में मोटरसाइकिल जो निकल आई है। हम करते हैं आपके अपनों की मेहनत की कदर, इसीलिए अब आपको मिलेगी रकम की वसूली के साथ और भी ज्यादा खुशियाँ। दुनिया भर से मनीग्राम के जरिए भेजी गई रकम सुनहरी बैंक की 285 से ज्यादा ब्रांचेस से वसूल करें और बजरिया कुरानदाज मोटरबाइक, स्मार्टफोन्स, कैश प्राइजेस और कई शानदार इनामात। मजीद मालूमात के लिए 021-1766744। सुनहरी बैंक, रोशन हर कदम। शराब तो आप लागू है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला सेमीफाइनल 17वें ओवर का आगाज। हसन आए हैं गेंद करवाने के लिए। पहली गेंद हसन चीज गेंद को आर्म साइड पर आहिस्ते के साथ खेला और रन बनने का भी मौका नहीं।
ہو. آخری گیند جو تھی شاداب کے اوور کی بڑا اونچا تھا, یہ فیلڈر تھے بابر اعظم تھے, کیچ لینے کی سلپ پہ کوشش کی, گیند ان کے ہاتھ سے لگ کے اچھلا. اس کے بعد پھر ڈائیو ضرور لگائی تھی حسن علی نے, جو کہ فیلڈر تھے کہ کسی طریقے کے ساتھ جو گیند آ رہا ہے اس کو کیچ کر لے, لیکن دونوں فیلڈر کی جو کوشش تھی کامیاب نہیں ہو سکی. اس دوران حسن گیند کی, اس گیند کو آن سائڈ پر کھیلا, لیکن شاداب یہاں موجود تھے, رن بننے کا موقع نہیں کر دیا. تو اسکور ہے اس وقت 46 رنز کی یہ پارٹنرشپ ہو چکی ہے, 34 رنز پر گری تھی. اس کے بعد پھر جونی بیرسٹو اور جو روٹ نے اچھی بیٹنگ کی ہے, اب تک 80 پر اسکور پہنچا دیا ہے. 46 رنز کی پارٹنرشپ ان دونوں کے درمیان اب تک ہو چکی ہے. گیند شارٹ گیند تھی, اس کو اٹھایا ہے, آؤٹ ہونے کا خطرہ, اور آؤٹ, کوئی غلطی نہیں کی اور دوسری وکٹ پاکستان لینے میں کامیاب ہوا ہے. گیند گیا, حفیظ نے وہاں فیلڈر, کوئی غلطی نہیں کی. تو حسن جو اس ٹورنامنٹ میں خاصے کامیاب ہیں, میں کامیاب ہو گئے ہیں 80 پہ 2, اور کامیابی پاکستان کے لیے. اس جو بیرسٹو جو بڑے تیز رفتاری کے ساتھ کھیل رہے تھے, بلا کر پاکستان آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوا. تو دوسری وکٹ لینے میں کامیاب ہوا پاکستان 80 پر 2. بیٹری کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کا حل صرف مسافہ بیٹری کا راکھا, صرف مسافہ لمبے عرصے تک پیشنٹ ڈسچارج فل چارج. یہ گئی بیٹری کو سوئی جگاڑ. اب جگاڑ نہیں بولتا چلے گی, کیونکہ بولتا لایا پاکستان میں پہلی بار ایڈوانس ٹیکنالوجی ٹیوبولر بیٹری گھنٹوں روشن رکھے اور چلے سالہ سال. بولتا جگاڑ کا دور. آپ کے اپنوں کی محنت کی قدر, اسی لیے اب آپ کو ملے گی رقم کی وصولی کے ساتھ اور بھی زیادہ خوشیاں. دنیا بھر سے منی گرام کے ذریعے بھیجی گئی رقوم سوناری بینک کی 285 سے زائد برانچز سے وصول کریں اور بذریعہ قرآن نازی جیتے موٹر بائک, اسمارٹ فونز, کیش پرائزز اور کئی شاندار انعامات. مزید معلومات کے لیے 021-111-76374. سوناری بینک, روشن ہر قدم. So best goes and his goal. Two belligerent runs and he was in danger to Pakistani bowlers. Shadab, in fact, sending down too many long hops, and such a magnificent batsman who used to pull him or play him through the covers. One catch was dropped when he tried to pitch the full-length delivery, and the batsman edged it. It went through the hands of slipped down to short third man. So Bairstow had got his moments of luck. Score is fast reaching 100. It is 80 for the loss of one wicket. And Root is the batsman who is the winner. اور روٹ بھی ابتدا میں ایک بہت اچھا بیٹنگ نہیں کر رہے تھے, خاص طور پر عماد کی بالنگ کے سامنے. جو گیندیں اندر کی جانب آتی ہیں, عماد کی جو آرمر ہوتی ہیں, ان کو وہ کوئی زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ کھیل نہیں پا رہے تھے, جج ٹھیک نہیں کر پا رہے تھے, بیک فٹ پر چلے جاتے تھے. تو قسمتی رہی کہ وہ ان گیندوں کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ مینج کر گئے اور بولڈ نہیں. Tanveer, at least Muhammad Hafiz performed somewhat at the mid wicket. He got the catch. 17واں اوور ہے, حسن ملی ہے. اور جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے, اس ٹورنامنٹ میں اب تک ہیزل ووڈ نے 9 وکٹیں حاصل کی ہیں, سر فہرست ہیں. پلنکٹ ان کے بعد ہیں انگلینڈ کے, انہوں نے 8 وکٹیں حاصل کی ہیں, اور اب حسن کی بھی وکٹوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے. یہ 17ویں اوور کا تعلق ہے, وہ کھیل ہو رہا ہے, اور اب تک حسن کے 3 گیندیں ہوئی ہیں. ان کا پہلا اوور ہے. حسن روٹ کو گیند کروا کے آئے, گیند کی اس مرتبہ اندر آتی ہوئی گیند کو بیک فٹ پر آ کر کھلاڑیوں کی جانب سے پش کیا تھا. شارٹ پک کی پوزیشن پر گیند کو فیلڈ کر لیا گیا, رن بننے کا کوئی موقع نہیں.
शॉर्ट गेंद करवाई थी जिसे पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और मिड विकेट की फील्डर ने कोई गलती नहीं की कैच करने में। 4.8 इस वक्त रन औसत हासिल है इंग्लैंड को। 80 दो खिलाड़ी आउट है और ये 17वें ओवर का खेल है। हसन एक मरतबा फिर आए गेंद की, इस मरतबा के साथ गेंद को पुश किया और जल्दी के साथ एक रन ले लिया। तो आज हमने ये देखा है कि इंग्लैंड के ये खासा रन भी उन्होंने अच्छे लिए हैं और तेजी के साथ रन लिए हैं। और मॉर्गन आए हैं अब तो बैटिंग करने के लिए। मॉर्गन भी बड़े अच्छी फॉर्म में है, अच्छी बैटिंग करते हैं और बड़ी तेजी के साथ रनिंग मिडफील्डर विकेट भी करते हैं। Yes, he's in very good form, scoring heavily in this tournament, and once again a very crucial coming in for him in the middle, taking guard from umpire, left-handed batsman Ian Morgan, England's captain, rehearsing some strokes. England team now depending on him and Wood. Is now playing the fluent strokes. Personally, one of the best bowlers in Champions Trophy. Gets ready over the wicket to bowl to Ian Morgan. Off he goes and bowls on this one on the off-stump short pitch. He goes on the back foot and plays it back to the bowler. So Pakistan would try to rip through this English batting. They have got 2 wickets, but there were opportunities which were not gained. A couple of catches, and then luck did not favor them. A couple of decisions were turned in favor of the batsman. They were lucky, but they were surely not out. 17 ओवर हो गए हैं, 81 रन से 2 खिलाड़ी आउट हैं। This ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by Roo Afza Ramadan Mubarak. आओ इस रमजान हम दर्द बन जाएं, एक एक मुस्कुराहट बांटते हुए जिंदगी के रंगों में घुल जाएं। रूह अफ़ज़ा रमजान मुबारक। तो जैसे ही देखा है कप्तान ने कि बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले मॉर्गन आए हैं, तो हफीज को इंट्रोड्यूस करवा दिया है उन्होंने, इसलिए कि शोहरत है उनकी कि वो लेफ्ट हैंडर्स को अच्छी गेंदें करवाते हैं। इस वक्त जो रूट उनके सामने है, पहली गेंद हाई गेंद की, शॉर्ट गेंद की थोड़ी सी बैकफुट पर आकर इस गेंद को खेला है बैकफुट पॉइंट की जानिब। बाउंड्री लाइन से फील्डर दौड़ते हुए आए, एक रन का इजाफा और जरूर अब सामने अपना एक रन लेने के बाद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर चले गए हैं। मॉर्गन अब सामना करेंगे हफीज का। They made it a bright sunny morning in Cardiff, and there was no news of an interruption. ये अच्छी बात है और शायकीन क्रिकेट के लिए खुशहाल बात है। एक स्लिप मौजूद है हफीज के लिए, पहला गेंद खेलेंगे मॉर्गन। हफीज ग्राउंड को गिराया, गेंद की बैकफुट पर आकर इस गेंद को खेला है विकेट की जानिब। गेंद को फील्ड किया गया, एक रन बनाने का मौका, पहला रन ये मॉर्गन का। 83 हो गया है इंग्लैंड का स्कोर, 2 खिलाड़ी आउट है। 4.8 के करीब इस वक्त रन रेट है इंग्लैंड का और हफीज बॉलिंग करवा रहे हैं। पहला ओवर है उनका, तीसरी गेंद करवाएंगे। Hafiz, the off spinner, over the wicket, goes away, and on the leg stump this time flicks it towards deep mid wicket. One more run to the total. Sarfraz, as a captain, took some decisions today, and they were under consideration by cricket critics. Well, one of them was to bring in Shadab in place of Fahim Ashraf. Some people thought Fahim Ashraf had really bowled beautifully. Next delivery on the leg stump and played towards mid wicket, and two wickets and scored some lovely runs. He was just unlucky to get out through an extraordinary way. So he should have played today's game. But anyhow, he's not playing. Shadab is playing. Next delivery. Some people were of the view that since Adil Rashid is in England side, he in fact prepares the English batting as far as spin bowling is concerned. So it was advisable to bring in Fahim Ashraf. At our balls, and this time drives it, and is it a catch? Just a fielding. गुड फील्डिंग, क्योंकि 18वां ओवर खत्म हुआ था, इसलिए हजरत तेजी के साथ फील्डर अपना
Champions Trophy 2017 is brought to you by Sunehri Bank Limited, मेहनत वसूल। डियर अली, कैसे हैं आप? हम सब यहाँ ठीक हैं। मैं जानती हूँ आप परदेश में रहकर इतनी मेहनत सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, पर आप अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे। प्लीज इतना ओवरटाइम मत किया करें। पता है गुड़िया अटक अटक कर बाबा बोलने लगी है। इस बार आपके भेजे हुए पैसों के साथ लकी ड्रॉ में स्मार्टफोन भी मिला है। हम करते हैं आपके अपनों की मेहनत की कदर, इसीलिए अब आपको मिलेगी रकम की वसूली के साथ और भी ज्यादा खुशियाँ। दुनिया भर से मनीग्राम के जरिए भेजी गई रकूम सुनहरी बैंक की 285 से ज्यादा ब्रांचेस से वसूल करें और बजरिया कुरानदाजी जीते मोटर बाइक, स्मार्टफोन्स, कैश प्राइजेस और कई शानदार इनाम। मजीद मालूमात के लिए 02111766374। सुनहरी बैंक, रोशन हर कदम। शरारत तो आप लागू है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहला सेमीफाइनल, दोनों टीमें एक एक तब्दीली के साथ मैदान में उतरी हैं। इंग्लैंड की टीम में आज रॉय को शामिल नहीं किया गया, बैरस्टोन की जगह खेल रहे थे। 43 रन बनाने के बाद वो हफीज के हाथों आउट हुए हसन की गेंद पर। पाकिस्तान की टीम में आज आमिर शामिल नहीं है, उनकी जगह रोमान रईस को शामिल किया गया था और पहली कामयाबी रोमान रईस ने दिलवाई थी पाकिस्तान को जब हेल्स को बाबर ने कैच किया था रोमान रईस की बॉलिंग पर। हसन अपना दूसरा ओवर करवा रहे हैं। 19वां ओवर है ये इंग्लैंड की इनिंग का। गेंद थी, ऑप्शन बार गेंद थी, गेंद को देखा कि ऑप्शन बार निकल रही है, गेंद को खेलने की कोशिश नहीं की जाने दिया कीपर के ग्लव्स में। एक के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, रूट ने 28 रन बनाए हैं, 9 विकेटें आउट की हैं एसडीवुड ने, जबकि 8 खिलाड़ी आउट किए हैं। हसन ने इस टूर्नामेंट में अब तक 8 विकेट ली हैं। तो 8 विकेटों देखते ही रहोगे दोनों की भी इनकी तरह। साथ पाकिस्तान और इंग्लैंड के बॉलर्स इस टीम में मौजूद हैं। हसन ने 8
Six for two projected at this current rate, only at 230. Pakitan overtakes him at 328. Not much change of himself yet. Ramesh Raja, ending time. He's excellent against the left hand. I'll be repeating myself because his track record is superb. And I think Pakistan have once again bowled superbly on a flat track. Somehow been able to limit England's excess through the infield and also not big shots been hit by him. The projected score 6 and over 270. England walked down 270. I think it'll be a huge success for them. I think this one is one amazing. It looks like it's a little bit sort of low, quite skinny for the spinners. We've seen it already. Take a little bit of turns. The 100 comes up for England in the 22nd over. It looks got a little bit of holding it for the spinners. Occasionally if it hits a leg, skips through as well. Down on the top goal, firstly. Got 3 split inside the first 20 overs. Maybe they're looking to back their batting later on. Good partnership. 21 to 33. No, who can be aggressive whenever he wants to be. Tailmate for limited overs. Slow shot. Okay. Pakistan would be well advanced to use a bit of Shadab Khan. Wrong run against the left hander. नहीं है लेकिन फिर भी इंग्लैंड ने अपनी 2 विकेट महफूज रखी हैं और अच्छे तरीके से अब तक स्ट्राइक को रोटेट भी किया लेकिन चौके नहीं लग रहे जो अहम हो गए। 4वीं ओवर के बाद अब तक कोई बाउंड्री नहीं लगी है कि जो कि शॉर्ट पिच ऑन साइड पे खेल कर एक हासिल किया बैट्समैन ने। सेकंड के हिसाब से इंग्लैंड 101 101 को जो अब तक 2 ओवर और 5 गेंदें की है। अच्छी की बॉलिंग की अब तक हफीज ने कोई भी मुश्किल नहीं की लेकिन तो बहुत ज्यादा मुश्किल में नहीं डाला। खासतौर पर बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले मोहन को शॉर्ट पिच पर चिपकाकर ऑफ साइड पर भेज के बैट्समैन ने और किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। इंग्लैंड 101 2 विकेट के नुकसान पर 22 ओवरों का खेल मुकम्मल चुका है। हम कहते हैं आपके अपनों की मेहनत की कदर इसीलिए अब आपको मिलेगी रकम की वसूली के साथ और ज्यादा खुशियां। दुनिया भर से मनीग्राम के जरिए भेजी गई रकम 16 से ज्यादा ब्रांचेस से वसूल करें और बजरिया कमालबाजी जीते मोटर बाइक स्मार्टफोन्स कैश प्राइजेस और कई शानदार इनाम। मजीद मालूमात को 1766 मैरी बैग अक्षरा जो आप This ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by
सुनहरी बैंक रोशन हर कदम. Well, England getting the 100 in the 22nd over. Put into bat by Pakistan as Hassan starts his fresh over. First delivery outside the off stump is pushed him towards the deep cover position. The batsman easily pick up a single. That single now takes England on to 102 for 2 in the 23rd over. England still has plenty of aggressive batsmen to follow. There's Butler, Stokes, the danger man. Tremendous 100 against Australia the other day. And now the Rashid. And then, of course, the 9, 10 and Jack. As Hassan from round the wickets to Morgan. Down the leg side. Tries to pull him but doesn't connect. Ball still taking the faint edge and travels towards the fine leg boundary for a 4. That was rare ball by Hassan. He's been bowling extremely well. He's been targeting the stumps, keeping the batsman quiet, putting that equation straight down the leg side and paying the penalty. 106 for 2. Hassan bowling from over the wickets to the right-hander and from round the wickets to Morgan. This one coming in to Morgan. Cox just pushes it down the track. The bowler in his follow-through picks it up. Notice once he picked that delivery in his follow-through. Hopefully everything is okay with him. Already Pakistan not having Amir in the side today. Back straight. Morgan and Joe Root now. The two batsmen got to take England to a big total. Morgan on 12 of 22 deliveries. Waiting from over the wickets. Passes the umpire. This one coming in very watchfully in towards the Hassan. 1 for 4. Root at the non-striker's end is on 37. The first 50 coming off 58 deliveries. The second 50 of 72 deliveries. It only indicates that how economical and tight Hassan's kept them. Imad Wasim also had some very tight overs. Morgan comes forward and pushes it towards the mid-on region. The fielder is fairly deep, and by the time he gets to it, the batsman have picked up a single. That single now takes England to 107. 107 for 2. The first wicket falling when the score was 34. The second at 80. Alex Hale, the first to go back to the pavilion after having made 13 with 2 fours in the 6th over. And then Johnny Bairstow was caught by a freeze of the bowling of Hassan when he made 7 with 4 fours in the 17th over. Morgan, fine innings by him so far in the Champions Trophy, 50 in the first match, a 50 against Australia. As the next delivery comes towards the square leg region, the fielder gets towards the batsman in the meantime and picked up 1 at the end of that over by Hassan. It's 108 for 2. This ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by Ru Afza Ramadan Mubarak. इस रमजान हम दर्द बन जाए, एक एक मुस्कुराहट बांट दे, जिंदगी के रंगों में खुल जाए. रू अफसा रमजान. इस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ये सेमीफाइनल कार्डिफ में जारी है और इंग्लैंड के 2 सरकर्दा बैट्समैन और साउथ अफ्रीकी और दरमियान में काफी ऐसे मौके भी मिले यहाँ पर कैच हो सकता था. मॉर्गन ने कोई की हसन अली को और हाई लेग पर गेंद गई. इससे पहले हाथ पूरा में डालते सरफराज तो एक कैच भी हो सकता था. बहरहाल मॉर्गन और रूट इस वक्त मैदान में मौजूद है. इंग्लैंड 108 विकेटों के नुकसान पर 23 ओवर और 1 गेंद फेंकी जा चुकी है. शादाब गेंद कर रहे हैं और उन्हें मिक्स बॉलिंग की है. पास बहुत अच्छी बॉल है. पास बड़ी पुअर डिलीवरीज की है. लेकिन ऑफ साइड ड्राइव किया डीप कवर की जानिब और 1 रन हासिल किया बैट्समैन ने. 1 रन के इजाफे से अपनी का स्कोर 109. 2 विकेटों के नुकसान पर लंबी फ्लाइट भी देते हैं और 1-2 गेंदें बड़ी शार्प टर्न हुई हैं.
शादाब की और उन्होंने बैट्समैन को डिसीव किया है, परेशान किया है। तक ये रन दे चुके हैं, 3 ओवर 2 गेंद जो कि बुरे नहीं हैं। मतलब प्रैक्टिस करेंगे और तैयार इनका सामना करने के लिए। मॉर्गन 13 रन के नॉट आउट है, 24 गेंदों का सामना किया है। शादाब के साथ खास बातचीत कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम गुफ्तगू चाहिए और क्रिकेट के हवाले से, लाइन क्रिकेट के हवाले से, और ये क्रिकेट के अंदर बड़ी इसकी आम पॉइंट कवर और मिड ओवर की शायद ओवर पिच के ज्यादा फ्लाइट तो ड्राइव किया बैट्समैन के लिए जॉन श्रीलंका का इलाका नहीं। का बड़ा अच्छा हासिल में बड़ी अच्छी बॉलिंग थी और पास में बॉल थी मिडिल ऑफ स्टंप पर और काफी डॉट बॉल भी किए। ये गेंद मिडिल स्टंप को ऑन साइड पर खेलकर आसानी से हासिल किया। मॉर्गन 110 जो बाउंड्रीज है चाहिए, लेकिन दरमियान में स्ट्राइक को भी कर रहे हैं बैट्समैन। Pakitan, she was not controlled, but had a good response so far from the spinners. Hakeem Shah did not the same, which did look extremely dry in the morning. Spinners to have a field there, roll massively. 48 in 12 overs from Pakistan is not bad. Cross, Ravi said they did from the toss and chose the ball when he spins in the game so well. This decision could have been sort of more transparent in the last game in the fact we only first against Sudan. But was down to 70 to 80 target on this pitch. Ball gets moved a little bit more in the game. In the opponents will look for some swinging off. Shut up today, it's been untouched to all those runnings from that structure. The last spin so far. That's into the gap and well struck. Some shot from Ravi, shot. So Ravi's got Morgan jumped straight on. Yeah, the extras one man out, deep squarely. Middle. That's got his ability to make difficult angles. How good you got there, Ravi? Let's see. That's good cricket. Excellent piece of running. Very good with soft hands, almost dead behind that one for a run. This is where Morgan is so good in counting. A big shot in the meanwhile, make good deliveries. But find difficult angles. Right. It's 118 for 10.
You always find them passionately involved in the game. Something a little hot to be sitting outside the ship. It's in unique justice, so there's a second place. Is it in the six? There's an example of how good he can be in the finish on that putting up that picture. Likes it. Very good. The message, it's encouragement every now and then. It's not tough to let the ball in one area in this country, so we know on spinning traffic, strong guns and left swings, what happens more. Not from just the just yeah, thank you, Dr. Constable. Please, Mark was checking out every missed out, which will be not able to make proof of the place. Shit. Our rabbit not great. One is clearly missed blood, so no position position to the others. There's already the arm in nothing more than that, and inside edge, no blood.
swing against it. I think we're seeing a bull track in this one quite a lot over the stumps. Again, that just confirms to me that this pitch is really bumps and skidding other times. Oh, that's actually off the last over. देखते रहोगे, बरोगी भी